Yes, good morning everyone. So today we are going to start the complex number on exercise 4.1 of your NCRT that we have already started. Introduction is has done in your last lectures. So here I will explain the problems of exercise 4.1. Okay, so let's start without wasting any time. Okay class, so the first question is 5 iota multiplied by minus 3 by 5 iota. It is written here. Okay. So we just multiply the constant terms and the iota part separately. ठीक है, so iota के साथ iota को multiply कर देंगे. So as you can see, just a minute. Okay. So iota into iota is equal to iota square, and you know iota square is equal to minus 1. So by calculating you will get the answer is 3. So I can write 3 in the form of a plus iota b. Okay, so in the following examples we will cover the problems in which we will convert the answer in the form of a plus iota b, that is real and imaginary part. Okay, so 3 को हम लिख सकते हैं 3 plus 0 iota. So here 3 is the real part of z and 0 is the imaginary part of z. Okay, I hope it is clear to everyone. Let's come into the next example. Okay class, so next question is iota raised to power 9 plus iota raised to power 19. सो आई टोल्ड यू, मुझे जितना भी क्वेश्चन है सभी को अयोटा की स्केयर में हमने बनाना होता है. ठीक है, सो अयोटा की पावर को 9 को आई कैन राइट अयोटा स्केयर रेज टू पावर 4, दैट इज 8. सो आई कैन राइट अयोटा की रेज टू पावर 9 इज इक्वल टू अयोटा रेज टू पावर 8 इंटू अयोटा. सो 8 को हम 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, यूजिंग एक्सपोनेंट्स 2 4 18. ओके, सो आई कैन राइट टू iota raised to power 8 in the form of iota square with power 4. ओके, सिमिलरली iota raised to power 19 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? iota raised to power 19 को हम कन्वर्ट करेंगे, पहले इसको इवन पावर में बना लो. iota raised to power 18 इंटू iota. नाउ 18 डिवाइड बाई 18 कैन ईजिली डिवाइड बाई 2. सो हम इसको लिख सकते हैं iota raised to power iota square raised to power 9 into iota. Okay, so here you can see the values. iota square is equals to minus 1. So जहाँ जहाँ iota square मिल रहा है आपको, you have to put the value of minus 1 and after solving you will get equals to 0. So here the real and imaginary part also equals to 0, and we have to write this in the form of a plus iota b. So you can write 0 plus 0 iota. I hope it is clear to everyone. Let's move further. Yes class, so this is your fourth question, again based on the simplifications. So 3 is multiplied in this bracket and iota we have to multiply under this bracket. So we will get 21 and 21, 7 into 3, that is 21 iota, iota into 7, that is 7 iota, and iota into iota 7, that is 7 into iota square. So now put the value of iota square. You can simply calculate the real parts only. 21 minus 7. Okay, 28 को हम 28 we cannot add to 7 and 21 because 28 contains imaginary part. Okay, so 28 is the imaginary part. We will not solve this imaginary part with the real part. Okay, so it will remain as it is.
सो 28 को हम कुछ नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा, बस रियल पार्ट को सॉल्व करो एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा b. ओके, नेक्स्ट अगेन द सिंप्लीफिकेशन. सो फर्स्ट ब्रैकेट, इन विद द फर्स्ट ब्रैकेट दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट दिस टर्म. ओके, तो ऐड हो रही हैं तो वी कैन सिंपली ओपन द ब्रैकेट्स. और यहाँ पर मैंने क्या किया बेटा, रियल पार्ट्स को सेपरेट ऐड कर लिया है एंड इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट ऐड कर लिया है. ओके, सो इमेजिनरी पार्ट में से मैंने आयोटा कॉमन निकाल दिया. आगे कैलकुलेशंस आप कर सकते हो सिंपली. अगेन आफ्टर सॉल्विंग दीज टू टर्म्स आई विल गेट दिस टर्म एंड दिस टर्म, एंड दिस टाइम अगेन मैंने रियल पार्ट को सेपरेट कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया. ओके, दीज आर द सिंपल कैलकुलेशन दैट यू हैव ऑलरेडी डन इन 10th स्टैंडर्ड. So after the end, this is my real part 17/3 and this is the imaginary part 5/3. So this is the question that we have to write the answers in the form of a plus iota b. So this is the required form. Okay class. Yes everyone. So here is again the question based on simplification. 1 minus iota raised to power 4. So 1 minus iota raised to power 4, I can write it iota 1 minus iota square into 1 minus iota square. So power 4 को मैंने स्केयर में स्प्लिट कर दिया. यहाँ पर a प्लस iota b का a माइनस b के होल स्केयर का फॉर्मूला लगेगा. एंड हेयर आल्सो वी विल यूज़ द आइडेंटिटी a माइनस b होल स्केयर. Got it? And iota square again equals to -1. So these are the simple calculations you can simply do. And look at here, after solving you will get -4 and you have to write -4 plus 0 iota. Okay, so this is the required form of complex number. Okay, now coming to the next question, very important. Yes guys, so in this question, let me erase this. So this is summation n from 1 to 100 iota raised to power 3n. It means हमने n की वैल्यू 1 से लेके 100 तक फिल करनी है एंड 1 by 1 उन सबको ऐड करना है. ओके, सो इफ़ आई पुट iota equals to n equals to 1, so iota raised to power 3n. मेल ते आ गया, ये उत्थे तां नहीं हो गया. Yes, so 3n, अगर n की वैल्यू 1 फिल करेंगे सो वी विल गेट iota raised to power 3. अगर n 2 फिल कर दिया सो वी विल गेट iota raised to power 6. n 3 फिल कर दिया तो वी विल गेट iota raised to power 3 3 are 9. ओके, सो 3 के मल्टीपल्स में हमारी यहाँ पे पावर्स आती रहेंगी अप टू कितनी, 100 तक. तो n की वैल्यू 100 फिल करेंगे, iota की पावर 300 आ जाएगा. ओके, सो एज यू नो हम लोग iota के साथ डील करते हैं iota स्केयर बना के. तो जहाँ जहाँ पर इवन पावर्स हैं वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, iota स्केयर आराम से कॉमन आ जाएगा. जहाँ पर ओड पावर्स हैं वहाँ पर हमें एक एक iota सेपरेट बाहर निकालना पड़ेगा. ओके, सो एज यू कैन सी जहाँ पर iota क्यूब है तो मैंने iota स्केयर इंटू iota लिखा. iota की पावर 9 है तो iota की पावर 8 इंटू iota लिखा है. iota की पावर 15 है, iota की पावर 14 इंटू iota लिखा है. और 14 को फिर से कन्वर्ट कर दिया 2 raised to power 7. ठीक है, 7 to the 14 होता है. सो इस तरह से व्हेन यू सॉल्व, आफ्टर दैट इफ़ यू मेक ए सेट ऑफ 4 टर्म्स, तो यू कैन सी this plus minus iota and plus iota is cancel each other. -1 plus 1 cancelled each other. So all the terms are cancelled with each other. So I will get the answer 0. Is it clear? So again 0 we can write 0 equals to 0 plus 0 iota. So this is the required form. I hope it is clear to everyone. Just read these questions again, watch the video again and again and practice by your own. Okay, prepare the separate notes without the help of the video. Okay, first of all watch the video, then without the help of the video solve the problems by your own, then you will get realize. Okay, yes everyone.
So next question is multiplicative inverse. How to find the multiplicative inverse? So as I told you already, that is the multiplicative inverse of 5 is 1/5. Multiplicative inverse का मीनिंग होता है कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आंसर आए अगेन. ओके, जैसे कि 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होगा 1/7. सो अगेन द आंसर इज 1. तो इट मीन्स हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं सिंपल वर्ड्स में. तो इफ़ आई वांट टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3 आयोटा, तो उसका आंसर क्या होगा 1/4 - 3 आयोटा. सो दिस इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3 आयोटा. तो इसको सॉल्व करने के लिए वी विल यूज़ द कंसेप्ट ऑफ रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर. जैसे हम रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करते थे 10th क्लास में, वैसे ही हमने यहाँ पर करना है. अगर माइनस है तो प्लस वाले के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. ओके, सो ऊपर तो सेम 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे लगेगा फार्मूला a² - b² का. सो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर दैट इज़ 3 स्क्वायर. अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी, दैट इज़ माइनस माइनस प्लस. एंड सेपरेट द एलसीएम 25 25. सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड form, that is a plus iota b. Okay, is it clear everyone?